So anybody who sat in the lecture today and hesitated before speaking out loud in the class or rehearsed their order before saying it to the person in the coffee shop or the restaurant, this video is for you. Hi everyone, welcome back to my channel Mind the Gap. I'm Jayati और आज की वीडियो में हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे which is English speaking and accents. जब हम कनाडा मूव करते हैं which is a predominantly English speaking society, right? 75% of people living in Canada speak in English. तो जब हम यहाँ मूव करते हैं और हमें अब इन मोस्ट स्पेसेस इंग्लिश में बात करनी होती है तो हम बहुत हेजिटेट करते हैं या हम इंटिमिडेट हो जाते हैं. तो हम बात करेंगे कि ये हेजिटेशन या एम्बैरेसमेंट होती क्यों है and what can we do about it, how can we understand it and move forward and not feel so aware of our language as a new immigrant in the country. Last week मैंने एक वीडियो बनाई थी स्टूडेंट्स के ऊपर where I spoke about how it's so important to communicate, it's so important to build connections, build mentorship or immerse yourself into the Canadian culture eventually whenever you feel comfortable, so that you are able to make Canada your new home. बट अगर हम कम्युनिकेट करने से ही घबरा रहे हैं, अगर हम हेजिटेट कर रहे हैं इंग्लिश में बात करने से, तो हम वो मेंटोरशिप या वो सोशल कनेक्शंस फॉर्म करेंगे कैसे? एंड दिस इज अ वेरी वैलिड एंड वेरी common problem in South Asian immigrants when they move to Canada. We feel so hesitant in not being able to translate our thoughts जो हमारी native language में हो सकते हैं into English, or we feel embarrassed about not being understood because of our accent. Do an activity for me once you're done watching this video. Go to YouTube and type English accent in different countries, and you'll find that there are different people sitting together speaking about the same thing in different accents and enjoying together. And here we are feeling so aware about our English accent, the way we sound, the way we speak. अब ये हेजिटेशन या एम्बैरेसमेंट दो रीजंस की वजह से होती है. नंबर वन तो ये कि हम अपने आसपास इंग्लिश लैंग्वेज इतनी ज़्यादा सुनते नहीं हैं. इवन दो इंडिया में बहुत सारे स्कूल्स हैं दैट हैज़ इंग्लिश इज़ द मेन लैंग्वेज, बट तब भी हम अपनी डे टू डे इंटरेक्शंस में इंग्लिश इतनी ज़्यादा नहीं सुनते हैं. वी यूजुअली स्पीक इन नेटिव लैंग्वेज. अगर नेटिव लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे हैं तो वी यूजुअली स्पीक इन मिक्स्ड लैंग्वेज, राइट? तो हम आधी इंग्लिश आधी हिंदी में बात कर रहे हैं, या कुछ वर्ड्स इंग्लिश के होंगे बट मोस्टली हमारी नेटिव लैंग्वेज के होंगे, या हिंदी के या पंजाबी के या उर्दू के, हम मिक्स करके बोलते हैं यूजुअली and we don't think about it much. But when we move to Canada, वहाँ पे predominantly English speaking है, right? So wherever you have to go, you have to speak in English. English accents इंडिया में भी बहुत तरह के होते हैं. There are so many cities और states in India जहाँ पे बहुत ही migrated population है. पर हम क्या कहते हैं कि अरे दिस पर्सन इज फ्रॉम द नॉर्थ, राइट, तो इसलिए उनका इस तरह का इंग्लिश एक्सेंट है, या दिस पर्सन इज फ्रॉम द साउथ. तो हम ये समझ के अंडरस्टैंड करके दूसरे इंसान का एक्सेंट समझ लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, एंड वी आर एबल टू अंडरस्टैंड इट विदाउट एनी प्रॉब्लम, राइट? एंड इंग्लिश एक्सेंट्स आपको यहाँ पे भी अलग अलग मिलेंगे. So there is American English, there is British English, there's Canadian English, of course, there is Australian English, and so many other kinds of English accents that we hear. But क्योंकि हमको आदत नहीं है वो accent सुनने की, तो हमको एकदम से बहुत ज़्यादा change feel होता है. But actually, Canada is also an immigrant country, and Canada also is used to having different kinds of accents in English. इसका जो second reason है, it's an idea which I find very interesting, and tell me if you connect with it. It's the colonial mindset, or the colonial inferiority complex. Now let me give you an example. When we are growing up, we are studying the history of our country. तो हमारी हिस्ट्री का इतना बड़ा पार्ट है colonialism. How much humiliation we had to carry as a nation, as a country, as people. तो हमने शायद उसको directly face नहीं किया है, पर हमारे ancestors ने face किया है उस चीज़ को, और हम अपनी stories से, या हम अपनी history से, या हम अपने tradition से उस चीज़ को अभी तक carry करते आ रहे हैं. Psychology में हम इसको बोलते हैं collective unconscious. और इसके साथ जो हम कैरी करते हैं दैट इज़ द इन्फीरियोरिटी. हमारी कंट्री में एक तो इंग्लिश बोलना इतनी बड़ी बात और इतनी बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है, which it probably is. It's good to speak in English in the age of globalization. But इतनी कोई बेइज्जती वाली बात भी नहीं है कि हम इंग्लिश प्रॉपरली नहीं बोल पा रहे या फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहे. It's almost something to be ashamed about.
वो बोलते हैं ना, इट्स नॉट जस्ट द कंट्री दैट इज कॉलोनाइज्ड, इट्स द माइंड। हमारा जो माइंड है, जब वो एक इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन से मिलता है या एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाता है, विच इज़ सपोजिटली अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, वेस्टर्न कंट्री, or we meet a person who looks a certain way, speaks in a particular accent, or has a certain skin color, तो हम अपने आप ही अपने आप को या तो पीछे कर लेते हैं या हेजिटेट करने लगते हैं या बहुत अवेयर हो जाते हैं in the way we come across to the other person. And it's time to be aware of this complex that we are carrying probably intergenerationally and do something about it. So, what can we do the next time we go out and we have to interact with a person who is outside of our community? The more you interact, the more you talk, the more you hear other people talking, in English, because now you're in a country that is predominantly English speaking, आपके communication skills अपने आप develop हो जाएंगे over time. You watch movies, you listen to songs. Just see it as something that you have to practice and you'll pick it up. It's not something that you have to be embarrassed by. So the next time somebody says, sorry, I didn't catch that, or sorry, could you say that again, or sorry, what? Just try saying it again in your own accent or theirs. It doesn't really matter till the time you're able to communicate and get it across to the other person. And not feel like you're not good enough or second guess yourself. Next time जब आप अपना नाम change करोगे या accent में बोलोगे या छोटा कर लोगे, because a lot of times our names are very difficult to pronounce for people in Canada. If you want to do it, do it. Do it for your convenience, do it for the other person's convenience, but not out of embarrassment for your older identity. बहुत सारे लोग हैं जो ओवर टाइम कनाडा में आके एक्सेंट डेवलप करते हैं, which is okay. I mean, if you're picking it up to fit in, or if you're picking it up because you are interacting with people who are speaking a certain accent the entire day, आपका अपने आप accent धीरे धीरे करके change होना शुरू हो जाएगा. So do it because it feels natural. Do it because you want to do it, not because you feel embarrassed of your older accent, and not because somebody's accent is better than yours. That's all I have for you today. Please like, share, subscribe. Please let me know what you thought of the video below. If you don't want to write in the comments below, you can also write to me on email. The email is in the description below. I'll see you next week. Till then, take care and bye bye.